Assalamu alaikum. I welcome you all in another lecture of ME-1002 basic mechanical engineering. In our first lecture, we discussed about fundamentals of thermodynamics. We discussed about the application of mechanical engineering, and then we move toward the course outline, and then we have the course assessment and basic introduction of the course, right? So initially we discussed about thermodynamics and energy. What's the difference between thermodynamics, energy, and what are the topics which we will be covering in this course. We discussed briefly about the history of thermodynamics in our previous lecture. We discussed about the difference between classical and statistical thermodynamics. Then we discussed about the dimensions and units and the importance of these importance of dimensions and units. Then we discussed about the SI system and English system, and we discussed two numericals to explain the importance of dimensional homogeneity. Furthermore, we discussed about some unit conversions, and then we discussed about piston cylinder arrangement, which we will be using quite often in this course. Afterwards, we discussed about the concepts of systems, boundaries, surroundings, and then we discussed about closed and open system, closed mass, which is also called closed system, is also called closed mass, and then we discussed about the open system, which is also called control volume system. So this is a recap of the previous lecture. You can watch my previous lecture from the link which I uploaded on LMS. Please have a look at the video, and if you have any question, please ask me in the live session, which will be announced on LMS, inshallah. So moving further with our course, now let's discuss about a very important aspect of this course: properties of a system. First of all, let's discuss what is property. In order to explain property, सबसे पहले हम एक बात देखते हैं कि प्रॉपर्टी बेसिकली किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है. मिसाल के तौर पर अगर आप कोई एक लेट्स से अगर हम एक बेसिक सी एग्जांपल लेते हैं, एक शख्स है जिसका कुछ वेट है, वॉल्यूम है, हाइट है, लेट्स से वेट एंड वॉल्यूम है, वेट एंड हाइट है, सॉरी. सो अगर आप किसी शख्स को डिफाइन कर रहे हैं तो आप उसको कैरेक्टराइज करते हैं विद सर्टेन प्रॉपर्टीज़ की इसकी हाइट इतनी है और इसका वजन इतना है. सिमिलरली किसी भी सिस्टम की बात की जाए तो सिस्टम के अंदर आइदर गैस होती है या लिक्विड होता है, तो हम करेक्ट प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं थ्रू सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज़. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखा हुआ है मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, विच मीन्स कि अगर मुझे इस सिस्टम को डिफाइन करना पड़ेगा, इस सिस्टम के अंदर तो मैं कहूँगा कि इस सिस्टम का मास इतना है, इस सिस्टम का वॉल्यूम, इस सिस्टम का टेम्परेचर, इस सिस्टम का प्रेशर, इस सिस्टम की डेंसिटी इतनी है. तो बेसिकली मैं इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सिस्टम की वो डिफाइन कर रहा हूँ. तो मैंने इस सिस्टम को डिफाइन कर दिया. So ये जो properties and these are physical quantities which define the system. आगे चलते हैं. There are two different types of properties. One is intensive property and one is extensive properties. Intensive properties are those properties which are mass independent. ये बात समझ लेते हैं. What does this mean? And the extensive properties are those properties which are mass dependent or size dependent. For instance, अगर मैं let's see this example. We have a container which has some gas or liquid or whatever, and the mass of the system is m, and the volume is v, temperature T, pressure and rho is P and rho. So for instance, if I divide the whole cylinder into two parts, what would happen? That the mass will be divided equally, volume will be divided equally, but the temperature, pressure and rho will remain same. So which means that those properties which are divided accordingly, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने आधा किया तो मास आधा हो गया, वॉल्यूम आधा हो गया, पर टेम्परेचर, प्रेशर एंड रो जो है वो सेम रहा. बिकॉज रो जो है किसी मटेरियल की सेम रहती है, चाहे आप फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल समझ लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पानी का कंटेनर है, यू हैव अ कंटेनर ऑफ वाटर. अगर एक ग्लास ऑफ वाटर का की डेंसिटी भी वही होगी जो कि एक टैंक ऑफ वाटर की डेंसिटी होगी. सो मतलब क्या है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को आधा कर रहे हैं तो अगर आप वॉल्यूम बदल रहे हैं या मास बदल रहे हैं तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा. विच मीन्स कि मास, वॉल्यूम आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, whereas temperature, pressure and rho are the intensive properties. This is important. Okay, specific properties क्या होती है? अच्छा, हम ये करते हैं specific properties वो properties होती हैं जो basically extensive properties होती हैं
पर उनको हम डिवाइड करते थे मास से, ताकि जब हम मास इंडिपेंडेंट बना दें उस प्रॉपर्टी को, ताकि फॉर एग्जांपल अगर मैं मास अपॉन मास करूँ तो बना जाएगा वी अपॉन मास लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम विच इज़ मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम्स। सो इसका फ़ायदा ये होगा कि इसका फ़ायदा ये कि सिस्टम जो है मास इंडिपेंडेंट है और साइज़ के ऊपर मास प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं कर रही। सब बेसिक प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। डेंसिटी आप सबको पता है, दिस इज अ वेरी ओल्ड बेसिक कॉन्सेप्ट। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। Specific volume is basically, and just remember any quantity which is specific is basically that quantity divided by mass. So अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि small v is the specific volume that is equals to capital V upon mass, which is actually equals to 1 upon rho if you compare this relation, right? This is these are two properties. Specific weight is basically the weight of the unit volume of a substance. For example, अगर आपके पास एक substance है उसके यूनिट वॉल्यूम का वेट कितना है तो इसका रिलेशन जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है रो जी, वेयर रो इज द डेंसिटी एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी अनदर एक और प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस की जो कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस कंपैरिजन देती है between the density of that particular substance and density of water. It's a unitless quantity because the densities are divided by each other, which makes it a unitless quantity. So for example, like the Sg is 1, it means that the density, the substance is water. But if this Sg is greater than 1, which means that that particular substance or fluid is heavier than water. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके पास ब्लड है, सी वाटर, गैसोलीन, इथाइल अल्कोहल, तो ये तमाम फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल गैसोलीन की बात कर लेते हैं तो गैसोलीन इज बेसिकली आम ज़बान में हम कहते हैं पेट्रोल है, but if it is 0.7 which means that the density of gasoline is 700 and the density of water is for example 1000, so it is equals to 0.7. So the gasoline will not sink in the water, or so it will float on the top, right? So any number which is greater than 1 is heavier than water, and any number which is less than 1 is lighter than water. Moving further, हम बात करते हैं स्टेट एंड इक्विलिब्रियम की। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज स्टेट। स्टेट मींस अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। फॉर इंस्टेंस अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर एक कंटेनर है जिसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है एंड द मास इज 2 kg, T1 20 डिग्री सेल्सियस, V1 इक्वल्स टू 1.5 मीटर क्यूब। सो एट दिस पॉइंट ये तमाम प्रॉपर्टीज जो इस सिस्टम को डिफाइन कर रही हैं ये इसकी स्टेट 1 है। बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, ये अगर पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाता है तो मास सेम है, टेम्परेचर सेम है, बट वॉल्यूम जो है वो थोड़ा बढ़ गया। तो इन दिस इज द सेकंड स्टेट। तो स्टेट डिफरेंट हो गई, मतलब कोई प्रॉपर्टी बदलेगी तो स्टेट डिफरेंट हो जाएगी। दिस इज द फंडामेंटल, एनी सेट ऑफ प्रॉपर्टी एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड स्टेट फॉर अ सिस्टम। सो इक्विलिब्रियम क्या होता है? A state of balance, in an equilibrium there are no unbalanced potential. So basically हम इसको देख लेते हैं कि what is equilibrium. Equilibrium मतलब ये है कि एक बैलेंस है, कोई अनबैलेंस पोटेंशियल नहीं है जो कोई तब्दीली ला सके। फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे आपने वॉल्यूम 1.5 था और वॉल्यूम जो है 2.5 हो गया, तो दिस इज स्टेट 1। जब आपने इसका वॉल्यूम बढ़ाया तो आपने एक बेसिकली प्रेशर को ड्रॉप किया, इसकी वजह से एक अनबैलेंस पोटेंशियल क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से आपके पास जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो गया। थर्मल इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर भी है, तो ये सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जो प्रेशर है यहाँ का वो बराबर है इसके दूसरी स्टेट के, बट इन दिस केस दिस इज नॉट द इन दिस केस द प्रेशर वेरीज एक्चुअली बिकॉज द वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर ड्रॉप्स। फेज इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास किसी सिस्टम का कोई एक फेज है, फॉर इंस्टेंस लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है, तो वो उसी फेज में रहे, तब्दील ना हो, तो हम उसे कहते हैं फेज इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इट मीन्स कि देयर आर नो केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन इन द प्रोसेस इन द सिस्टम। सो इन अ कंप्लीट इक्विलिब्रियम आपके पास ये तमाम के तमाम इक्विलिब्रियम satisfy होनी चाहिए। there should be no temperature difference, there should be no pressure difference, there should be no phase difference, and there should be no chemical difference. For instance, let's see an example here. अगर आपके पास एक स्टेट है, उस स्टेट के अंदर आपके पास स्टेट मतलब एक हालत जिसमें certain temperature है, but after some time what happens, temperature changes from 20 to 32 and 23 to 32 and the whole system undergoes a temperature change. So in this example what happens, the thermal equilibrium actually disturbed.
So now this is state number 1 and this is state number 2. So in thermodynamics we deals with equilibrium states. हम during the process क्या हो रहा है मीनिंग देखते हैं, हम ये देखते हैं कि उस equilibrium state के वक्त क्या हो रहा है, सिस्टम किस तरह बिहेव कर रहा है. State postulate and it's a very important postulate to understand. किसी सिस्टम को भी डिफाइन करने के लिए आपको जो प्रॉपर्टीज चाहिए वो कितनी होनी चाहिए. अगर कोई कंप्रेसिबल सिस्टम है तो यू ओनली नीड 2 इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. इंडिपेंडेंट मतलब क्या कि वो आपस में डिपेंड ना करिए. फॉर एग्जांपल मास एंड वॉल्यूम आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, बिकॉज अगर आप मास बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा. एंड अगर लेट्स से प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट द प्रॉपर्टी शुड बी इंडिपेंडेंट एंड इंटेंसिव. फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो 2 प्रॉपर्टीज काफ़ी हैं मुझे इस पूरी स्टेट को डिफाइन करने के लिए, इस गैस की, नाइट्रोजन की. क्योंकि अगर आपके पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, वॉल्यूम 0.9 मीटर क्यूब पर केजी है, दिस इज बेसिकली द स्पेसिफिक वॉल्यूम. तो आई कैन फाइंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम दीज टू दिस नॉलेज. टेम्परेचर की नॉलेज से और वॉल्यूम की नॉलेज से मैं बाकी प्रॉपर्टीज भी निकाल सकता हूँ. गॉट इट. सो हम जब बाकी टेम्परेचर निकाल लें, इसका प्रेशर निकाल लें, मास निकाल लें, तो इन दैट मैनर वी एक्चुअली डिफाइंड द होल स्टेट. तो स्टेट पोस्टुलेट ये कहता है कि आपके पास यू ओनली नीड 2 क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट एंड दे शुड बी intensive properties. Moving further, process and cycle. First of all, this is important thing. Process basically क्या है? Any change that the system undergoes from one equilibrium state to another. Thermodynamics में हर state basically एक equilibrium को define करती है. For instance, अगर point 1 के ऊपर मैं बात करता हूँ इस system की, we have a piston cylinder device. We have a cylinder, we have a piston, and in between there is a gas. Initially, this piston is at point 1. What happens? Point 1 is having a larger volume. If I plot the whole process on a PV curve, where V is on x-axis and P on y-axis, so at the point 1, the volume is larger compared to V2, but the pressure is lower, right? It's a low pressure at point 1. What happens if you press it? You are actually increasing the pressure, but meanwhile you are decreasing the volume because you are moving on the left-hand side of x-axis. So this point 1 is at the initial state, that could be called a equilibrium state, and point 2 is a final state which is also at equilibrium, and in between the line, this line is called the process. Point 1 से point 2 जो एक equilibrium state से दूसरी equilibrium state तक जो system आ गया है, और meanwhile it changes its properties, this is called process. पाथ क्या होता है? पाथ बेसिकली रास्ता. फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जाने के बहुत सारे रास्ते हैं. एक रास्ता ये है, there could be more paths to reach point 1. This could be linear, this could be like this could be like this as well. So any path which has different paths will be having different states at different points. Cycle means any process any process whose initial and final stage are similar. For example, in this example, we have initial state 1 and we have initial state 2. So while moving from 1 to 2, then after reaching 2, it comes back to 1 again. So this is the final stage is identical with the initial state. So this is called a cycle. Cycle means एक चीज जो cycle में है और वो बंद हो जाती हो. Like it's a closed loop. It should be a closed loop, right? Now, meanwhile, in between this process, every point is representing a value of V and P, and every point is basically representing a equilibrium state. Quasi-equilibrium state. This is an interesting concept to understand. What happens, because when you see this example, if the piston is moving very slow, what would happen? The molecules inside the container will adjust itself and come to a newer value of properties, which means a new state. So quasi-equilibrium process is basically an idealized system, idealized process, which actually remains infinitesimally close to an equilibrium. मतलब ये है कि वो इतना आहिस्ता मूव करता है कि जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को फौरन रीओरिएंट करके दोबारा इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेते हैं. इक्विलिब्रियम मीन्स कि जब तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज नहीं हो रही, थर्मली, मैकेनिकली, phase wise and chemically. But when the system is moving rapidly moving, what would happen? The equilibrium will be disturbed. So quasi-equilibrium processes are slow processes, but they are highly effective, and this is an idealized process because they do not exist in real world. Moving further,
There are different types of processes. For example, one process is called isothermal process. Any process during which the temperature remains constant. Iso means something which is constant and similar. Isothermal means any process जिसमें आपके पास टेम्परेचर तब्दील ना हो रहा हो. Isobaric are those processes जिसके अंदर प्रेशर तब्दील नहीं हो रहा. आइसोकोरिक आर प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम तब्दील नहीं हो रहा. फॉर इंस्टेंस आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में कोई मूविंग बाउंड्री नहीं है, कोई पिस्टन नहीं लगा हुआ. अगर आप उसको हीट करते हैं तो व्हाट वुड हैपन, द प्रेशर एंड टेम्परेचर माइट will rise but the volume will not change. That's an example of an isocoric process or isometric process. Adiabatic processes are those processes which do not have any heat transfer, which means कि आप एक सिस्टम जो वेल इंसुलेटेड है, ना एनर्जी इसमें जा रही है ना उसमें एनर्जी आ रही है. Isentropic processes are processes which deal with the which are during which the entropy is constant. So entropy is a concept which we will be discussing later in this course, inshallah. But just to give you a head start, isentropic are processes which have a constant entropy. Moving forward, steady state processes. Any process which actually any steady state processes are those processes which do not actually change with time, which means that if the properties are not changing with respect to time. And usually in engineering, in mechanical engineering, the devices can be modeled as steady flow devices जिसके अंदर प्रॉपर्टीज जो है तब्दील नहीं हो रही. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, आपके पास एक कंटेनर है जिसमें मास इन मास आउट हो रहा है, and there is a temperature profile of the whole control volume. The temperature remains constant. At 1 p.m. the profile is here 300, 250, 225, 200, 150, and just after 2 hours the temperature is constant. So this is an example of a steady state process where nothing is changing. So usually the mechanical devices like turbine, pumps, boiler, condenser, heat exchangers, and power plants, refrigeration system can be modeled as a steady state process for a longer time. And the opposite of steady state system processes are transient processes in which the system is actually undergoing a change, or they can also be called as unsteady processes as well. But in thermodynamics, in your course we will be discussing about steady state processes, which are rather simple processes to understand or analyze. Moving forward, again this is same thing, this steady flow processes they are defined here, where the mass and masses the properties are not changing. Temperature and zeroth law of thermodynamics. Temperature is basically the degree of hotness and coldness. Thermal equilibrium is basically when there is no temperature difference throughout the system. This is the law which is called the zeroth law of thermodynamics, which states that if two bodies are in thermal equilibrium with a third body, then those are in thermal equilibrium with each other. For example, you have body A, you have body B, and you have body C. If body A and C has same temperature, so they are in thermal equilibrium, which means there is no heat transfer. And body B is also in thermal equilibrium with body C, so body A and B are in thermal equilibrium with each other, right? That's a very common sense, right? So that's called zeroth law of thermodynamics, and we will be discussing about first law and second law of thermodynamics later in this chapter, this course, inshallah. If you have any question, please let me know in the live session, because that is how we will be clearing your queries and questions, right? Temperature scales. We have different temperature scales. We have Celsius scale, we have Fahrenheit scale, and we have thermodynamic temperature scale, which is Kelvin. Different temperature scales are basically to measure temperature of a system. For example, at different temperature scale, there are different representative points. For example, ice point, which is the water and ice are equilibrium. Steam point, where liquid and water vapors are in equilibrium. Usually, steam point in layman terms can be understood that the point where the water start boiling, but actually in technical or thermodynamic terms, it's the temperature at which the liquid, water, and water vapors are in equilibrium. So we will discuss them inshallah in the later lectures. What are these temperature, and we will see that the temperature, the temperature at which the water boils is not 100 degrees Celsius, because you can boil the water at 100 degrees Celsius, but we will see that how water can be boiled at a much lower temperature. For example, 5 degrees Celsius or 10 degrees Celsius.
We will see in this course. That will be an interesting thing to understand, interesting thing to look for. Let's move forward. Kelvin scale is an SI unit of temperature. You might have seen this scale in your high school or entrance classes, and Rankine scale is basically the equivalent of Kelvin scale in Fahrenheit scale. Kelvin is to Celsius and Rankine is to Fahrenheit. These are some of the relations which are quite like these are relations which we have covered in your previous classes. These are constant formulas which are provided in the book as well, so they are just conversion factors, not difficult to understand. Let's talk about pressure briefly and then we will move forward. Pressure is defined as the force per unit area. It's Newton per meter square. There are different units of pressure which are written over here. There are pascals, there are ATM, atmospheric pressure. We have kilopascal, which is a larger unit for pascal, same thing. Bars and PSI, pound per square inch. There are British unit and there are SI units. So we will be discussing, we will be using the pressure quite often in our future lectures. Pressure is basically the amount of force which a fluid is applying per unit area. For instance, if you have a container and a container is filled with liquid or gas, the gas molecules are applying some force on the surface of the container, and that force per unit area is the pressure. And similar thing goes for the liquid as well. So let's stop here, and in the next video we will discuss about energy and the conversion of energy from one form of energy to another form, and the conservation of energy, and we will discuss about the first law of thermodynamics. Thank you for listening.